India heeft zaterdag haar onafhankelijkheidsfeest gevierd. Dus zo ook in Suriname bij de residentie van de Indiase ambassadeur aan de Dr. Sophie Redmondstraat. De flag-hoisting ceremonie, zoals dat zij altijd traditioneel doen. Verder nog het ontvangen van gasten. Het geheel vond plaats samen met rekening houdend met de COVID-19 maatregelen. On the 74th Independence Day of India, I heartily congratulate you all. It is my privileged honor to read out the address to the nation of Honorable President of India on the eve of 74th Independence Day. भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का 74वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश। मेरे प्यारे भारतवासियों, नमस्कार। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रह रहे भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त को हम सब तिरंगे को लहराते हुए स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लेकर और देशभक्ति से भरे गीत सुनकर उत्साह से भर जाते हैं। हमारे युवाओं के लिए ये स्वाधीनता के गौरव को महसूस करने का दिन है। इस अवसर पर अपने स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। उनके बलिदान के बल पर ही हम सब आज एक स्वाधीन देश के निवासी हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों की नींव पर ही आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। हमारे दूरदर्शी राष्ट्र नायकों ने अपने विविध विचारों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोया था। उनकी साझा प्रतिबद्धता थी देश को दमनकारी विदेशी शासन से मुक्त कराना और भारत माता की संतानों के भविष्य को सुरक्षित करना। उन्होंने अपने कार्यकलापों से आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान को मूर्त रूप प्रदान किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे। उनके व्यक्तित्व में एक संत और राजनेता का जो समन्वय दिखाई देता है वह भारत की मिट्टी में ही संभव था। सामाजिक संघर्ष, आर्थिक समस्याओं और जलवायु परिवर्तन से परेशान आज की दुनिया गांधी जी की शिक्षाओं में समाधान पाती है। समानता और न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता हमारे गणतंत्र का मूल मंत्र है। गांधी जी के बारे में युवा पीढ़ी की जिज्ञासा और उत्साह को देखकर मुझे अत्यंत खुशी होती है। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उत्सवों में हमेशा की तरह धूमधाम नहीं होगी। इसका कारण स्पष्ट है। पूरी दुनिया एक ऐसे घातक वायरस से जूझ रही है जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। इस वैश्विक महामारी के कारण हम सब का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। It is very reassuring to note that the central government, while anticipating the tremendous challenge, responded effectively and well in time. For a country so vast and diverse with high population density, meeting this challenge requires superhuman efforts. All state governments took measures in accordance with local circumstances. People also supported wholeheartedly. With our committed efforts,
we have succeeded in containing the magnitude of the pandemic and saving a large number of lives. This is worth emulating by the wider world. The nation is indebted to doctors, nurses, and other health workers who have been continuously on the forefront of our fight against this virus. Unfortunately, many of them have lost their lives battling the pandemic. They are our national heroes. All corona warriors deserve high praise. They go much beyond their call of duty to save lives and ensure essential services. These doctors, health workers, members of disaster management teams, police personnel, sanitation workers, delivery staff, transportation, railway, and aviation personnel, providers of various services, government employees, social service organizations, and generous citizens have been scripting inspiring stories of courage and selfless service. When cities and towns go quiet and roads are deserted, they work tirelessly to ensure that people are not deprived of health care and relief, water and electricity, transport and communication facilities, milk and vegetables, food and groceries, medicine and other essentials. They risk their own lives to save our life and livelihood. Confident of our strengths, we reached out to help other countries in their fight against COVID-19. In responding to calls from countries for supply of medicines, India has once again shown that it stands by the global community in times of distress. We have been at the forefront in evolving regional and global strategies for an effective response to the pandemic. The overwhelming support India got at the elections for the non-permanent seat of the United Nations Security Council is a testimony to the goodwill we enjoy internationally. It has been the tradition of India that we do not just live for ourselves, but work for the well-being of the entire world. India's self-reliance means being self-sufficient without alienating or creating distance from the world. It implies that India will continue to engage with the world economy while maintaining its identity. Dear fellow citizens, the world now realizes what our sages had said long ago. The global community is but one family, Vasudhaiva Kutumbakam. However, even while the world community needs to fight together against the greatest challenge before humanity, some in our neighborhood try to carry out their misadventure of expansion. Our brave soldiers laid down their lives defending our borders. Those worthy sons of Bharat Mata lived and died for national pride. The entire nation salutes the martyrs of Galwan Valley. Every Indian feels grateful to their family members. Their bravery in combat has demonstrated that while we believe in peace, we are also capable of giving a befitting response to any attempt of aggression. We are proud of the members of our armed forces, paramilitary forces, and police personnel who protect the borders and ensure our internal security. We have a lot to offer to the global community, especially for intellectual and spiritual enrichment and promotion of world peace. With this spirit, I offer a prayer for the well-being of one and all. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramya, sarve bhadrani pashyantu, ma kashchit dukh bhag bhavet. It means, may all be happy, may all be free from illness, may all see what is auspicious, may no one come to grief. The message of this prayer for universal well-being is India's unique gift to humanity.
while fulfilling the domestic requirements to deal with the COVID-19, India took the lead and was the first responder to humanitarian crisis in the region by deploying medical teams, dispatching naval assets, which demonstrated India's strong commitment to Prime Minister Modi's vision of security and growth for all in the region. India ensured timely access to essential drugs and medical items for over 150 countries and medical supplies as a gift to countries in South Asia, Africa, Latin America, and the Caribbean to assist them in their fight against corona pandemic. En dit was het TBN Prime Alert van maandag. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 874-93 874-93. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.